मेरी जैसे मम्मी को कैंसर की प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में भी गया हूँ। इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर डे का चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ बहुत कम अच्छा है। तो एक तरीके से ब्लेसिंग है, तो मेरे लिए थोड़ा बहुत खर्चा बच जा रहा है इन सब की वजह से। Gaurav's experience is among the many stories of individuals who unearth a renewed sense of hope at the Rural Medicare Centre, even in the face of seemingly unsurmountable challenges. The journey that commenced in 1978 was accompanied by its fair share of challenges. Each expansion, every additional bed symbolized a triumph over challenges and an unwavering commitment to serving the community. Situated in the heart of India, within the serene enclave of Saidulajaib in New Delhi, stands the Rural Medicare Centre, also affectionately referred to as RMC. Esteemed for its compassionate ethos, this institution shines as a paragon of budget-friendly, charitable healthcare within the vibrant tapestry of Delhi. We started in a hired godown at Mehroli. That was meant to preserve the fodders of the cows and buffaloes. Ultimately, we got a building which was really dilapidated building. So there was no door, no window. So we made all those and made a 11-bedded hospital. And it was a group of 7, as we often call it, to start Rural Medicare Society. And those 7 initial, I would say, stalwarts, they were responsible for setting up this magnificent institution. We didn't have any electricity of our own. We were running on the generators, and which was costing us exorbitantly. Plus some like medical facilities we couldn't give. We didn't have an ambulance earlier. We started with the ambulance. We had to refer orders, and then oxygen, then ICU setups. So we had a lot of challenges. Middle of the night, you had to come to see the patients. And when earlier, now it is quite good populated and densely populated. Earlier, it was all sparse. There were all fields here. But the best thing is that people had faith on us, and very fast we picked up, a number of patients increased. See, the core value of the hospital has never changed. And the core value of the hospital has been Seva. The transition from a modest garage-based setup to a thriving 30-bed multi-speciality hospital was far from effortless. As with all exceptional undertakings, the journey of RMC commenced with a visionary perspective. And at the helm of this transformative vision was Dr. J.K. Banerjee. Dr. Mrs. Banerjee and Mr. Banerjee, they were in London before coming to India. And then once they decided, they came and they started this institution that was the largest PHC at one point of time of Asia. And he started with a fee of ₹5. That is maybe, I think, now 40 years of the institution. Dr. Banerjee used to say, you keep working, funds will come. And that has been true. So we keep on working, jaisa bhi hai. We don't refuse any patient who needs genuine treatment and we can afford. And I was so impressed by his personality, his dedicated work, that I joined this place and established the orthopedic department. And since then, I am associated with this center and Dr. Gopal. Very clean, ethical practice. That is what attracted me here. Plus, that helping the people who have got not so much money or resources to on their account. The unwavering service offered at RMC is a product of the dedication shown by our doctors, who have made sacrifices to ensure its success. Dr. Banerjee's initial endeavour has flourished under the skilled and compassionate guidance of the team of doctors he inspired. The service is their primary motive. They all think that they are able to do something for the society. And that is the driving force for all of them. Elsewhere, they might be earning any amount, but here, what they
doing is just a token amount that they've been taking in and doing things around. जैसे हमारे यहाँ पे था कि एक बार अगर चेक कर लिया तो वो वापस हमें मिलने नहीं आते थे, बट यहाँ पे ऐसा है जिस टाइम भी हम उन्हें याद करें उसी टाइम सर वो हमारे लिए मतलब अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ का स्टाफ भी कुछ बढ़िया है, अच्छी बात करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, सब चीज़ का हुआ है इसमें। तो पता अच्छी हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे और इलाज भी बढ़िया होता है और सब चीज़ का इलाज है यहाँ पर। बहुत अच्छे डॉक्टर है, फ्रेंडली डॉक्टर है और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मम्मी एडमिट रही हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ है और जो हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस्ड हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। The resolute dedication, expertise, and limitless compassion of our doctors underpin RMC's noble mission. Through their care for patients and impact on lives, they exemplify the very essence of RMC's mission to make a meaningful difference. So much money is spent on making of a doctor. So I think we owe this to the country. अब मेरा शुरू से था कि खानी तो रोटी है, नोट नहीं खाना। Most of the consultants, a lot of consultants are here who have been here for more than 20 years, more than 25 years. So there must be a reason why they are here for these so many years. They earn also, but at the same time, they get satisfaction. So much of satisfaction, so much of blessings from the patients. And if you ask me personally, at a personal level, the blessings would weigh much more than the, any amount of money that you can earn. यहाँ पे ना जो लोग काम कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल गेन की बिल्कुल चाह नहीं है। उनको काम करके उसके रिजल्ट जो मिलते हैं, पेशेंट का पेन दूर करके, उसकी तकलीफ दूर करके, वो जो मिलता है सेटिस्फेक्शन, दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स। To this date, the patients get something from their village. They get milk for me. They get ghee. They get fresh vegetables. So this is heart touching, which we don't see in the private practice. अच्छा, मेरा ये कंसेप्ट था कि जो कोई फीस नहीं देगा, दुआएं तो देगा, and nobody can steal it. So I've been working with this principle for all these years. I have met God here not once but many times, in the form of patients, in the form of well-wishers, in the form of others, so many times. Amidst the compassion that defines RMC, the paramedical staff's dedication stands tall. Their generous contributions illuminate the path of healing, embodying the essence of care and empathy. वो कहते हैं ना कि राजा फतह करता है और असली लड़ाई तो उसके वॉरियर जो सैनिक होते हैं वो लड़ते हैं। तो हम तो सामने देख रहे हैं, पर असली जो बेस है, स्कैफोल्ड है हमारे हॉस्पिटल का, वो हमारे ओटी टेक्नीशियन, हमारे वार्ड के टेक्नीशियन, हमारे पैथोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन। यू गो टू एनी डिपार्टमेंट एंड जस्ट सी द टेक्नीशियन। एक एक्सरे वाला लड़का अगर अकेला भी है, एक दिन में 40 एक्सरे कर रहा है। लैब वाले लड़के ऐसे मशीन की तरह काम कर रहे हैं, उनको थकावट नहीं है। मतलब they had a great contribution. We used to trust them, and they made us, in a manner that we developed confidence on ourselves. That if we have to do surgery there, and if those people are there, nothing is going to be wrong, go wrong. The staff has been the backbone of the hospital. They take very good care of the patient. जब मैं यहाँ पर ज्वाइन की थी सर, तो मैं एक हाउसवाइफ थी जो कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, जो कि आज मैं आरएमसी में हर डिपार्टमेंट में काम कर सकती हूँ। जो कुछ सीखा हूँ मैं आरएमसी में ही आकर के मैंने सीखा है। यहाँ की मेरे को बीपी देखना भी नहीं आता था, लेकिन मेरे को यहाँ सब कुछ सीखने को मिला। आज वो ही है कि मैं ऑलराउंडर हूँ। जब यहाँ आए थे तब कुछ भी नहीं था, और यहाँ हमने बिल्डिंग हमने बनाई दिया कि हमने शुरुआत कर दिया कि बहुत कुछ मेहनत करने पर हमने धीरे धीरे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बढ़ाई हमने। उसके बाद तरक्की हुई और डॉक्टर मिले, काफ़ी वो आया हमारे पास। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है या कभी बहुत डिले हो गया, या एकदम टाइम पे सैलरी मिलती है और सारे बेनिफिट मिलते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटी है। जैसे हमें कोई प्रॉब्लम हुआ घर से भी हम लोग कभी बोलते हैं कि आज मैं आ नहीं सकती हूँ या घर में प्रॉब्लम है, तो हमें छुट्टी मिल जाती है। उसके लिए कोई हमारा पे नहीं काटता। हमारा सेल वगैरह में मैडम लोग हमारा एडजस्ट कर देते हैं।
जैसे हमें कोई जांच करानी है, सर्जरी है, तो सर हमारी फ्री में होती है। बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल फैमिली जैसे लगता है, इसीलिए इतने सालों में कहीं और जाने का मन ही नहीं हुआ है। All of this would not have been possible without the benevolent support of our donors. Their generous donations infuse healing and optimism, propelling the hospital's mission forward. तो जब मैं जुड़ा तो मुझे सबसे पहले एक श्योरिटी थी और पक्का विश्वास था, यहाँ पे एक एक पैसा जो भी कंट्रीब्यूशन में आया या मैंने जो भी कंट्रीब्यूट किया उसका सही सदुपयोग होगा। मतलब ये जो राइट यूजेज एंड द मनी विल नॉट बी वेस्टेड, और ये एक फैक्टर, एक मेन फैक्टर रहा जिसने मुझे इस अस्पताल के साथ अभी तक जोड़े रखा है। और इतने कम पैसों में इतनी अच्छी सर्विसेज देना, मैं सोचता हूँ ये एक हर शहर में एक अस्पताल ऐसा होना चाहिए। जो तो रोज़ यहाँ पे आते थे और डॉक्टर साहबों से बात करते थे, क्या चीज़ की ज़रूरत है, तुमको क्या करना है, तो वो इसी काम में लगे रहते थे। जहाँ भी उनको पता चलता था कि भाई यहाँ पे कुछ ज़रूरत है तो वहाँ वो पहुँच जाते थे। वो गरीबों को बोलते थे कि भाई जहाँ पे कुछ कमती है वहाँ देना चाहिए, बड़ी बड़ी जगह में तो बड़े बड़े लोग बहुत होते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे आते थे। फिर यहाँ के डॉक्टर वगैरह, सबका नेचर वगैरह, स्वभाव सब अच्छा लगा उनको, तो यहाँ से ज़्यादा ये रहते थे। तो my father used to come here every day, almost every day, because he was so attached to this institution. आके नहीं बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे, और जिस तरीके से डॉक्टर्स यहाँ पे सब पेशेंट्स की देखभाल करते थे, उनका इलाज करते थे, तो ही मतलब को बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने काफ़ी हेल्प की इंस्टीट्यूशन की, जहाँ तक कि अपना बल पड़ा उन्होंने कि भाई जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं यहाँ पे। We as doctors and staff at Rural Medicare Centre put in an extra effort to see that whatever contribution comes to us is utilized properly. And over the years, the strength of the belief that the donors have in us, well-wishers have in us, corroborates this, that each penny that they give here is spent properly. And that gives us a lot of satisfaction. At RMC, compassion meets innovation as cutting-edge technology intertwines with dedicated service. This fusion of compassion and advancement exemplifies RMC's unwavering pledge to forge a healthier, more promising tomorrow for its cherished community of patients. We are aiming at giving maximum affordable care to the patients, creating an infrastructure in terms of diagnostics, having doctors in various areas, infrastructure in terms of indoor patients care. So overall, we want to match the quality which is being provided elsewhere. फिजिशियन, सर्जन मैं हूँ, 2 लोग और हैं सर्जन, और पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, आई सर्जन डॉक्टर गोपाल हैं, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, स्किन और अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डेंटल, almost all facilities. And people have come to realize or identify this hospital as mostly a surgical hospital. There are medicine and other pediatrics and everything. But what I found out that if 10 people come to me and I advise them that you have to get surgery done, almost 9 out of those 10 people will get surgery done. We try and devise methods and means by which we see that the cost does not go up. Now, how do we entail that? One is that we have a very strict policy of levying charges, and we have a cap on everything. Our charges are about 1/6 normally of any nursing home, in this area. With unwavering determination, RMC looks forward to the path ahead, acknowledging the considerable distance left to traverse in its ongoing commitment to delivering exceptional care and support. The future though is very bright. Things will grow, things will improve. More young people would come and join. Why not patient have a tertiary kind of treatment
in our hospital. We hope that Rural Medicare Centre reaches greater heights and is able to serve more and more people. We'll keep on striving. It never comes to an end. There is no saturation point in growth. You keep growing, and we'll also keep growing. RMC's unwavering commitment to shaping lives continues, reminding us that the spirit of giving and care can illuminate the darkest corners and kindle a brighter future for all. Rural Medicare Society, serving the nation since 1978.